Hello everyone. I hope I'm audible and once again welcome to Lead Mentopine session. I hope you all had a very nice उत्तरायण और आप सबने बहुत कुछ खाया होगा उत्तरायण पे इस साल. And with that thought in our mind, we are today here for this Mentopine session on the topic of food and mental health. But before going to the session, there are some new people that I can see in today's Mentopine session, and I would quickly like to introduce you all to Lead. So, LEAD is an acronym for Leadership Enrichment for Adolescents through Assessment and Development. Our vision is nurturing new generation leaders, and mission is fostering leadership amongst adolescents by providing opportunities to discover, develop, and demonstrate their unique abilities for creating and sustaining ethical leadership in society. After 3 years of intense research by a team of psychologists, the LEAD framework was developed that you can see on your screen. The 4C model that is here that consists of confidence, character, collaboration and competence. ये मॉडल हमने काफी रिसर्च के बाद हमारे साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट के टीम ने बनाया था, जिसके ऊपर लीड के काफी सारे प्रोग्राम्स फोकस करते हैं. एंड लीड एम्स टू डेवलप लीडरशिप कैपेबिलिटीज अमंग्स एडोलेसेंट्स थ्रू दिस 4C मॉडल. Started in 2013, LEAD has already extended its programs to more than 30,000 students. Most of these programs are currently available in virtual variants as well. I'll quickly take you through some of our programs that we are doing virtually. We have the virtual LEAD camp, which uses experiential mode, काफी सारे games and live virtual sessions say we help participants discover and sharpen their leadership capabilities. We have the LEAD Test 2.0, which is an online psychometric assessment specially designed for the high school students. It identifies key strengths of students and their areas of improvement and provides detailed analysis on 17 leadership traits. The LEAD Awards is one of the most awaited event which is organized every year since 2013 for students of 8th to 12th grade, where students from all over India from different schools compete on one platform. स्टूडेंट्स 6 अलग-अलग स्टेजेस से गो थ्रू करते हैं, जो उन्हें डेवलप करवाती है बहुत सारी अलग-अलग स्किल्स और उन्हें रियल लाइफ एक्सपोजर देती है. Here are some glimpses of the LEAD Award ceremony. हर साल LEAD Award ceremony में we have different chief guests, prominent leaders अलग-अलग fields से जो interact करते हैं इन students के साथ. Also this year LEAD ने उनका 8th LEAD Award ceremony complete किया था, which was all held virtually. So सारे stages virtually हुए थे. जूरीज के साथ बच्चों का इंटरेक्शन वर्चुअली था. स्टूडेंट्स ने काफी सारे अवेयरनेस कैंपेन्स किए थे वर्चुअली. इस सब की और इन्फॉर्मेशन आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पे देख सकते हैं, प्लस स्टूडेंट्स ने कैसे प्रोजेक्ट्स किए हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं. मूविंग ऑन, वी हैव द लीड टीनोपाइन सेशंस, व्हिच इज लाइक मेंटोपाइन, हर एवरी वीक होते हैं. एंड इन सेशंस में दिस इज एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स, जहाँ पे स्टूडेंट्स उनके आइडियाज, ओपिनियंस एंड व्यूज शेयर करते हैं अलग अलग टॉपिक पे. Students खुद टॉपिक डिसाइड करते हैं, they are the host and they take the session forward. And coming for what we have gathered here today is Mentopine, which is a series of webinars for parents, teachers and educators. The Mentopine sessions are also held every week and we have experts to interact with you all on certain unconventional themes and topics. The speaker for today's session we have is Ms. Shweta Patel. She is the founder of Anandmay, which is a psychological and holistic wellness center. She herself is a renowned psychologist with vast experience over the years. She has qualifications of Masters in Psychology and Vedic Counselor under her belt. She has successfully counseled and helped patients all across the country as well as internationally. She uses a very holistic method of using psychology, Ayurveda, yoga, and knowledge of Vedanta with her patients. And with an aim of having bliss for all, she is here with us today to take the Mentopine session. So, ma'am, thank you for being with us here on Lead Mentopine. It is our pleasure to have you with us, and I would now like to hand over the stage to you. Thank you so much, Ivani, for the very warming welcome, and I welcome all of you who've taken their time out to attend this session. Namaste everyone from my side. जब मुझे बोला गया था कि आपको एक टॉपिक पे बात करनी है, बीइंग फ्रॉम द प्रोफेशन ऑफ साइकोलॉजी, तो आई थॉट कि समथिंग आई वांटेड टू प्रेजेंट कि लोग करंट लाइफस्टाइल्स के साथ रिलेट कर पाए. एंड जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया था, फूड एंड मेंटल हेल्थ,
आई थिंक एक तो लोगों को अभी भी दे आर डिस्कवरिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, सो लोग काफी ये वंडर कर रहे होंगे कि वो मेंटल हेल्थ और फूड का क्या कनेक्शन है। मेंटल हेल्थ तो मे बी डिसऑर्डर्स रहते हैं जो आपकी ब्रेन के साथ खेलते हैं, आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, बट ऑन अ वेरी लार्जर एंड ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इफ यू सी, फूड और मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत बड़ा कनेक्शन है। So I would love you all to take to this journey and bring about an awareness कि कैसे food and mental health एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। So we'll start with the presentation. Yeah. ये कुछ facts और figures हैं। I'm sure मैं आप सबको डराना नहीं चाहती हूँ। I would just like you all to read it through. The first slide says कि nearly 1 in 4 Americans have some type of mental illness each year. The CDC says that by 2020, depression will rank as the second leading cause of disability after heart diseases. Now, if you see the second slide, which says that recent studies have shown the risk of depression increases about 80% when you compare teens with the lowest quality diet, or what we call the Western diet, to those who eat a higher quality whole food diets. The risk of attention deficit disorder ADD doubles. इवन आप लोगों ने ADHD के बारे में भी सुना होगा। आजकल यंगर जनरेशन जो बच्चे हैं उनको काफी सालों को ADHD डायग्नोस किया जाता है, उसका भी सीधा कनेक्शन फूड के साथ बहुत बड़ा है। इफ यू सी ऑन टू द अदर स्लाइड विच इज रिटर्न कि द फूड इंडस्ट्री, अगर आप ये स्पेसिफिकली यूएस के डेटा है कि 1 ट्रिलियन की फूड इंडस्ट्री है, बट इफ यू सी other industry, that is the medicine industry, is a $3 trillion industry. Now, one aspect जिस पे मैं आप सबका ध्यान देना चाहूंगी कि पुराने जमाने में हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो हमसे इतने वेल ऑफ नहीं थे, उनकी फूड भी काफी सिंपल थे, इतने एग्जॉटिक फूड जो हम लोग आज खाते हैं उनके पास अवेलेबल भी नहीं होते थे। बट इफ यू कंपेयर तो फिजिकल और मेंटल लेवल पे जो भी उनकी डिफिकल्टीज रहती थी वो हमसे कंपेयर थी। तो व्हाई इज दैट कि जब हम इतने ज्यादा लोग अभी एफ्लुएंट हैं, वी आर वेल ऑफ, फाइनेंशियली भी हम लोग वेल ऑफ है, फूड हमारा हमको इतना इजीली अवेलेबल है, देन व्हाई इज दैट कि हम लोगों की जनरेशन में मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, क्रॉनिक इलनेस स्पेसिफिकली, जैसे आप डायबिटीज ले लें, कैंसर ले लें या ब्लड प्रेशर ले लें, हार्ट डिसीजेस ले लें, उसका रेट इतना ज्यादा क्यों है? आई थिंक इस चीज पे हम सबको ध्यान देना चाहिए। Now, if you read at this statistics, they say today 70% of all chronic illness are due to our lifestyle, which also includes our food habits. Yani they say कि 30% जो है that may be due to viral reasons, that as you see right now the coronavirus, or due to the other outside invasions, but 70% ऐसे disease है, chronic illnesses, जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस है, दे आर ऑल क्रॉनिक लाइफस्टाइल इश्यूज की वजह से है। एंड इफ वी मूव अहेड नाउ, these were some basic facts and figures. Before we actually delve into the main aspect, I want you all to let me know कि what is mental health issue according to you. If you could write it in the chat box, or however, if you could tell me what is mental health issues for you. So one answer that I'm getting is stress. Okay, if we actually see mental disorders or conditions that affect your thinking, feeling, mood and behavior, they may be occasional or long lasting. They can affect your ability to relate to others and function each day. ये इसका अगर हम देखें, this definition is from a psychological perspective. जैसे हम बोलते हैं कि ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है मेंटल हेल्थ इश्यूज का, कि मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या है? ओके, नॉट एबल टू कंट्रोल आवर थॉट्स, not sure what is going on around us, depression. Okay, so these are the answers that I'm getting, that people are saying कि this is what is mental health issues according to them. Very true, but as a holistic practitioner myself, this is a very westernized definition. अगर आप देखें तो इंडिया में साइकोलॉजी को लेके हमारे पास कोई ऐसा लॉज भी नहीं है, नीदर देयर इज अ गवर्निंग बॉडी। जो भी हम फॉलो करते हैं इट इज फॉलोड थ्रू APA जो अमेरिका का है, जिसे हम DSM बोलते हैं। जैसे हमारा एक कोड रहता है, डायग्नोस्टिक मैनुअल रहती है, वो भी अमेरिका की है। सो इट्स अ वेरी वेस्टर्नाइज्ड कंसेप्ट।
Now, I want you all to have another perspective also towards mental health. What another aspect can be about mental health? From the perspective of yoga and Ayurveda, the human mind is not seen in singular terms or individually. Whatever happens to the mind affects the body and vice versa, and an individual is seen on the level of mind, body, soul, and sense. I'll give you a very simple example of this. से फॉर एग्जाम्पल आपने शायद बहुत ट्रैवल किया है पिछले कुछ दिनों में या अभी फेस्टिविटीज गए, जैसे शिवानी ने कहा कि हम सबने बहुत खाया होगा, उंधियू है, फाफड़ा, जलेबी, एवरीथिंग. सो एट अ स्ट्रेच जब आपके फूड हैबिट ज्यादा बाहर का खाना हो जाता है, योर सिस्टम नेचुरली गोज फॉर अ टॉयलेट, राइट? नाउ ऑब्जर्व एंड टेल मी कि व्हेन योर सिस्टम इज अपसेट, यू हैव अ अपसेट स्टमक और यू हैव कॉन्स्टिपेशन, आपका मूड इमीडिएटली अफेक्ट हो जाता है. You don't feel fresh, you don't feel like doing, you feel like something is not correct in your body today. The day your routine has been followed, you're clear from inside, your gut is clear, you're not constipated, या आपको कोई stomach या gastric issues नहीं है, you're all fine. इवन नॉट गैस्ट्रिक इश्यूज, कोई फिजिकल इशू भी है, हाथ दुख रहा है, कुछ भी है, डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर ब्रेन. सिर दर्द हो रहा है तो भी it impacts your brain. And when your brain goes into overthinking, now today there are so many studies to show कि जैसे आपके stress level बढ़ते हैं, it directly sends a signal to your body. जैसे लोगों को anxiety attacks होते हैं, panic attacks होते हैं, तो your body goes into a survival mode. लोगों को nauseous feel होता है, they feel like vomiting, they feel breathlessness. So any activity happening at an adverse level to your mind affects the body, and anything which is not normal in your body affects the brain. So it is interconnected. Now in Ayurveda they also say, जैसे हम body types को divide करते हैं दोषास के हिसाब से आयुर्वेदा में, वात, पित्त और कफ. When you divide the body, so body is also seen on these three dimensions. But in the westernized concept of health or mental health, and सब लोगों को एक ही तरीके से देखा जाता है. आपको अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि आयुर्वेद में कहा जाता है जिनकी वात प्रकृति होती है, ठीक है, दे हैव अ एरी बॉडी, उनका दे आर मोर इराटिक इन द सेंस कि ओवर थिंकिंग उनका ज्यादा रहता है, उनको डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ओवर थिंकिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. सो दैट इज हाउ वी सी individuals very differently from the perspective of yoga and Ayurveda. Now moving on ahead, if you see, हम सबने पता है बचपन से कहावत सुनी है, जैसे हमारे बचपन में हमको पेरेंट्स ने भी बोला होगा. आप में से कितने लोगों ने ये कहावत सुनी होगी कि जैसा अन्न वैसा मन, कि तुम जैसा खाना खाते हो, जिसके हाथ का खाना खाते हो, वैसा ही तुम्हारा मन होता है. ये बहुत पुरानी कहावत है. अगर आपको याद हो तो पता है हमारे पुराने जमाने में बोलते थे कि कई चीजें जो है किसी किसी के हाथ से नहीं लेते, जैसे कि नमक है, ठीक है, वो किसी के हाथ से नहीं लिया जाता था. अगर आपको याद हो तो आपके ओल्ड एंड ग्रैंड मदर्स अगर रहते हैं तो जो सुबह का टाइम होता था, उस टाइम पे जिस बर्तन में या मटके में अगर पानी रखा जाता है तो वो उसको अच्छे से वॉश करके फ्रेश पानी लेके उसकी पूजा करके, एंड दे यूज्ड टू लाइट अ लैम्प ऑल्सो. That was a way of energizing the water, and it has a very, very deep science. Now the science is acknowledging as well, but from the perspective of you know an ancient wisdom also. So वो जो करते थे वो रिचुअल एवरी डे, जहाँ पे वो पानी रखा जाता था मटके में या कहीं पे भी, वहां पे उसको फ्लावर्स ऑफर किए जाते थे या दे यूज्ड टू लाइट दिया. सो बिकॉज आप जिस एनर्जीज के साथ खाने को टच भी करते हैं या वाटर को टच करते हैं, इट एक्चुअली इम्पैक्ट्स इट. एंड टू गिव यू अ लिटिल सेंस ऑफ हाउ इट वर्क्स, आई वुड लाइक टू शो यू अ वीडियो on this कि how water is affected with your moods and your emotions as well.
Yeah, so from here now I would like to all get you into this actual this thing aspect of food and mental health. अभी तक तो हमने discuss किया. I just wanted to make a background for you, giving you certain facts and figures, giving you certain examples. Now we getting on to this thing. You seen the video कैसे आपका सिर्फ एक इमोशन आपके पूरे the water molecules को change कर देता है, whether it's an emotion of hate, there is an emotion of love, care, anger, whatever it is. So don't you think कि जिस तरीके का खाना आप खाते हैं, even the food energy reaches to the food as well. आप जिस state of mind में हैं और जब वो खाना खाते हैं, that also impacts the body. The body has a natural intelligence of its own. आप इसी से देख सकते हैं कि if you eat a banana and a dog or elephant eats a banana, the banana will become a dog or an elephant and a human being. That's a natural intelligence that the body has of its own, right? वो बनाना है, वो अगर ह्यूमन की बॉडी में जा रहा है तो फिर वो डॉग नहीं बन जाएगा और वाइस वर्सा. So there is a very innate natural intelligence that all of us has, which uh, through the Ayurveda and yoga and through this thing, I would like to get it to you all. If we move ahead and you see, the type of food we eat has a huge impact on the mind. An average American is said to consume 200 pounds of meat per year. And if you bring it down to 50 pounds, you will see 75% of the people will not need antidepressants anymore. And it is any which ways. यहाँ पे इस चीज का कोई डिस्कशन मैं नहीं करना चाहती कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन का, बट इट्स जस्ट कि what are the statistics saying, what is that your body feels like eating, आप किस तरीके का खाना खा के you feel more energetic. You just see, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया कि आप बैक टू बैक 4-5 दिन तक बाहर का खाना खाओ, see how your body is, right? And then when you are eating your what you've been eating since childhood, your proper homemade cooked food, and see how your body is reacting. That is the ideal food that it should be for your body. And now, how I am connecting this to mental health and why eating meat and antidepressants is related is, ऐसा in the Ayurveda and yoga ये कहा जाता है कि when an individual is having meat, right, it's a non-vegetarian food, your body takes around 70 to 75 hours to digest the meat and remove it from your system. When you're having vegetarian fruits, जैसे आप fruits खा रहे हैं, vegetables खा रहे हैं, whole wheats खा रहे हैं, तो fruits का time रहता है around 2.5 to 3 hours. It just gets evacuated from the stomach and from your system also. Whole grains है उनको 12 to 13 hours लगते हैं digestion में. So now why this digestion aspect comes here and becomes very important is, you will get to know in the next slide, that is in Ayurveda. अगर आप कभी भी किसी आयुर्वेदा या सिद्धा प्रैक्टिशनर के पास आपका मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ के लिए भी ट्रीटमेंट लेने जाएंगे, तो द फर्स्ट एस्पेक्ट दैट दे विल ट्रीट इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डिसऑर्डर इज योर गट. गट यानी आपका कोलन, आपका पेट साफ आ रहा है कि आपको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है, आप किस तरीके का खाना खा रहे हैं, आप कब खा रहे हैं. ठीक है, आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि लोग वी जनरली वेक अप लेट इन द मॉर्निंग्स, राइट? फिर हमारा ब्रेकफास्ट लेट होता है, हमारा लंच लेट होता है, एंड आई सीन मेनी पीपल हैविंग देयर डिनर्स व्हिच इज वेरी वेरी लेट, लाइक 9 से 10 बजे तक के बीच में. I don't know how many of you are aware about the fact that सुबह से 3:30 की से 6:30 बजे का जो मुहूर्त होता है उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं. So that is a natural cleansing time for your body. If you are awake in that time, आपकी body का जो natural cleansing या evacuation process होता है, excretion process होता है, बहुत effortlessly हो जाता है वो सुबह के टाइम में. Now why so much of focus on the gut I am doing here and how this is related to mental health is, gut is not just an organ, it is called as the second brain. एक नई फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इमर्ज हो रही है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन साइकोलॉजी, which is not so much right now in here, but US may it has already started gaining so much of importance. Gut health, gut psychology, autism, ADHD. I had been to a conference last year in Kerala, and there was a very very senior Ayurvedic practitioner, and he had presented a presentation where he was ki
ऑटिज्म, जिसको हम यू नो बाय बर्थ जिनको बच्चों को ऑटिज्म होता है, ठीक है, उनको उन्होंने सिर्फ गट हेल्थ के द्वारा ट्रीट किया था। उन्होंने इस पे काफी रिसर्च पेपर्स भी सबमिट किए। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि how ADHD, how autism and many other, even depression is related to how your gut health is. Now, why gut becomes very important? Because it is also considered as the second brain in your body. I'll get on to that fact also here. If you can see here, serotonin. What is serotonin now? It's a neurotransmitter that helps to regulate your sleep, your appetite, your mood, your inhibit pain. यानी ये सारी चीजें जो है वो सेरोटोनिन आपका कंट्रोल करता है. Now, since 95% of your serotonin is produced in your gastrointestinal tract, and your gastrointestinal tract is lined with 100 million nerve cells or neurons, and it makes sense that the inner working of your digestive system don't just help you digest food but also guide your emotions. तो नाउ सी, इफ यू सी हियर कि वाई, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है. सेरोटोनिन लेवल जब आपका कम हो जाता है, that is the time when your moods, your emotions go for a toll. You feel start helpless कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे इतने mood swings क्यों हो रहे हैं. That is why so much of emphasis I am doing on the aspect of food and mental health. कि आपका जो gut है, that is considered to be the second brain, right? And the bacteria which is there in your gut plays an essential role in your health. And also, now if you see the connection between the diet and emotion, okay, कि आप किस तरीके का खाना खाते, stems from a close relation from your brain and your gastrointestinal tract, often called the second brain. Now, ये कैसे काम करता है, इसका सिंपल मैकेनिज्म मैं आपको समझाती हूँ. Your GI tract, your gastrointestinal tract is a home of billions of bacteria. वहाँ पे बहुत billions of bacteria होते हैं जो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं. न्यूरो और डोपामाइन और सेरोटोनिन है जो आर रिस्पॉन्सिबल for your happy mood, for your sad mood, the levels that goes up and down, this all controlled through your gut, not through your brain actually. Now, eating healthy food promotes the growth of good bacteria, which in turn affects the neurotransmitters very positively. On the other hand, जब आप जंक फूड खाते हैं, जैसे कि हाई कैलोरीज वाला, हाई शुगर, हाई कार्बोहाइड्रेट्स, हाई सॉल्ट्स, तो इट just directly affects your GI tract, and your brain receives कि what the food you've received is not in tune with the nature. अगर आप आज आपकी फूड हैबिट्स को भी देखेंगे तो हमारे घर में कितना सारा प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड होता है. वो सारा प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड है, वो आई थिंक उसकी एक्सपायरी डेट आप देखेंगे तो 6-8 महीने पुराना खाना होता है. नाउ इट्स लाइक अ डेड फूड, ठीक है. उस फूड को वापस अलाइव करने के लिए आपके बॉडी को उतना ही मेहनत करना पड़ता है. एंड जितना आप नेचर से दूर जाके खाना खाएंगे, योर बॉडी विल हैव डिफिकल्टी डाइजेस्टिंग इट, which will directly impact your GI tract. And जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होने चाहिए, जो हैप्पी हार्मोन्स which is dopamine and serotonin levels, that will get fluctuated, and that is how it impacts your mental health. आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि एनी फूड दैट इज प्रिपेयर्ड और उसको विद इन 4.5 hours to 5 hours में आपको कंज्यूम कर देना चाहिए. वी जनरली स्टोर फूड इन द फ्रिज, दूसरे दिन हम उसको वापस रीहीट करके खाते हैं. इससे उसमें इट बिकम्स तामसिक इन नेचर. अगर आप लोगों ने सुना हो तो देयर आर 3 गुणास विच वी स्पीक अबाउट, दैट इज राजस, सात्विक एंड तमस. तमस हो जाता है उसमें, एंड विच इज लाइक टॉक्सिन्स. So ultimately what we are doing is we are feeding toxins to our brain. If you move ahead and if you see 22% Indians suffer from constipation. Now you might think कि ये तो नॉर्मल सी चीज है. एक तो कॉन्स्टिपेशन की बात को भी लेके जैसे मेंटल हेल्थ पे टैबू रहता है, कॉन्स्टिपेशन का भी डिस्कशन ओपनली नहीं होता है. I've written on this enough also on my social media platforms that there is so much of emphasis that needs to be given on the gut health, because that is the most important area aspect of your physical as well as mental well-being.
Now, constipation, it can be very severe, it can be mild, whatever it is, but until and unless you don't have a clean gut, your functioning on the physical and mental level is definitely very, very impaired. Now, studies have also found that the human brain works the best when the stomach is empty. See, today what is happening is कि we are, जैसे मैंने आपको इनिशियली बोला था कि हमको किस चीज पे पॉन्डर करना चाहिए, व्हाट वी नीड टू पॉन्डर अपॉन इज कि हम लोग ने ये सुना है कि हमारे एंसेस्टर्स भी ये खा के गए हैं, बट हमें हमारी लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन देयर लेवल फिजिकल एक्टिविटी कंपेयर करने की बहुत जरूरत है. दे वर वेरी फिजिकली एक्टिव, वो खेत में काम करते थे, दे डिड नॉट हैव द हमारी लाइफस्टाइल उनके कंपैरिजन में काफी सेडेंटरी हो चुकी है. सो वी आर इन टेकिंग फूड more than what our body requires, more than what the energy actually demands. Now, when you have a very sedentary lifestyle, either we need to start exercising to keep ourselves healthy, or we need to check on our food intake. Constipation in the modern lifestyle is also one of the major reasons due to this. कि जितना हमारा फूड इनटेक की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा फूड इनटेक होता है. उसके सामने अगर आप देखें तो टुडे आई गेस majority of us who are living in the urban areas, we have like a 9 to 5 job जहाँ पे हम ऑफिस में एक ही डेस्क पे 9-10 hours तक बैठे रहते हैं. Due to travels and other commitments, we are not even able to spend half an hour or 2 hours for our physical exercise or anything. Hardly कभी कुछ walking होता है. उसके अलावा majority of us lack in any form of physical activities. Now, why an empty stomach is important? See, researchers have found that an empty stomach produces ghrelin, a hormone that carries a message to the brain that the stomach is hungry. Now, the interesting thing is that this hormone performs other functions as well. Ghrelin stimulates and heightens the performance of the hippocampus, the region in the brain that handles learning, memory, and spatial analysis, keeping us alert, active, and focused. आपने देखा होगा कि जब आपका पेट बहुत भरा हुआ है, नेचुरली एक लेथार्जी आ जाती है. जैसे व्हेन यू हैव अ नाइस good lunch in the afternoon and you feel drowsy and sleepy. Also, another aspect which I wanted to discuss here with this is how the brain works is ki people, the gap between the meals, it is generally advised that minimum 5 to 7 hours का gap आपके meals के बीच में होना चाहिए. रात को भी when you are having your dinner, at least you should go to bed after 3 hours of a gap. But because of the modern lifestyle, we have our lunches late, we go to dinners late, and फिर हम रात को सोने लेट जाते हैं. तो वो जो एक natural sync of the body that has to be there with the nature, that does not get into place, and which is a very, very major role which is leading to the mental health issues that you see today. Also, आप में से कई लोगों ने intermittent fasting का सुना होगा. It's a word that is creating so much of buzz these days. आपको YouTube पे, Google पे कई सारे उसके related information मिल जाएंगी. Intermittent fasting is nothing but what we Ayurveda and yoga has been saying since all these centuries and ages. कि you should only eat food when you are actually hungry. When you're sitting to have your meal, observe your body, observe your system. Is it really hungry? Is it asking for food? Is there a craving in the stomach? It is hungry and it needs food. So many of my patients, when I deal with them, जब मैं उनसे बात करती हूँ, तो one very major aspect when I'm diagnosing or dealing with them is कि आप में से कितने उनकी lifestyle कैसी है? What is their sleeping pattern? What is their food pattern? Majority of the case में the sleeping and food pattern is so disturbed, which leads to this acidity issues, gastric issues, and also which leads to then a lot of amount of stress. It is always said that if you want to live a healthy and balanced life, your body should always be in sync with the nature cycle. If you see, we as humans, अगर आप observe करें, we have watch, we have everything. But the animals, if you see on the streets, they have nothing. But they are still naturally very, very sync in the natural biological cycle. आप सुबह 5-5:30 उठेंगे अगर कभी, so you will see birds chirping, you will hear birds chirping outside. One very interesting aspect also
I've seen pet dogs also. This observation कि a dog by just smelling, okay, कि just smell करके भी he comes to know whether he has to eat this food or not. So we humans with such a higher level of consciousness, क्या हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारे लिए किस तरीके का खाना सही है और किस तरीके का खाना गलत है? बिकॉज आज जो भी क्रॉनिक इलनेस है या मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, वो मेजरली आपकी लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। देर आर सर्टेन पैथोलॉजिकल केसेस होते हैं जिसका परसेंटेज काफी कम है, जो बाय बर्थ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं विच आर देयर, बट if you are not in charge of what you are doing with your body, naturally your physical and mental health is definitely going to go for a toss. We see ahead, here you can see that the food that we eat today has a major chunk of processed and ultra processed food. Why do you think people get so addicted to it? One reason is the heavy marketing, and the other is the amount spent on it to make it more addictive to release dopamine. One of the major complaints जो मुझे आजकल पेरेंट्स से मिलती है, and surprisingly इसका correlation मैंने उन पेरेंट बच्चों में देखा है जो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, जिनको आजकल एडीएचडी लेबल किया जाता है, जो बहुत रेस्टलेस हैं, जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, अटेंशन की कमी रहती है, कि फास्ट फूड इनटेक या ये प्रोसेस फूड का इनटेक बच्चों में बहुत बढ़ जाता है। पेरेंट्स का ये रहता है कि मैम बच्चे और कुछ खाते ही नहीं है, दे गेट सो एडिक्टिव विद ऑल दीज थिंग्स कि पेरेंट्स को भी इनको छुड़वाना बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए। So the thing I want you all to understand that why this is getting so addictive is because जितना actually उनकी R&D में इतना जाता है पैसा to make it addictive, the taste buds, कि the children are not able to stay away from the food. अगर बच्चों को तो छोड़े adults को भी देखें तो जिनको constant बाहर के खाने की आदत लग जाती है, but they're not able to give up the food, whether it is processed food or the packet food और जो restaurant का खाना है to give you उसकी तो फूड एंड बेवरेजेस कंपनी है, वो $2 billion a year सिर्फ फूड मार्केटिंग के कैंपेन में देते हैं। अगर आपने देखा होगा तो बच्चे, पता है, जब भी कोई नई आइसक्रीम या वेफर या चॉकलेट्स की एडवर्टीजमेंट आती है तो नेक्स्ट डे तुरंत ही डिमांड करेंगे कि मम्मा पापा ये नया आइसक्रीम आया या ये आया है, सो आई वांटेड, या मुझे ये खाना है। So it is also the marketing that is driving force behind our current food habits, current drinks, or these are so much loaded in sugar, fats and salts that उनका consumption ही बच्चों की energy के needs के comparison में बहुत ज्यादा होता है। It's like जैसे हम वो कार को चार्ज करते थे, बचपन में खेलते थे, कार को चार्ज करके हम वो छोड़ते थे तो वो आगे भागती थी। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि बच्चों की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा ही वो कंज्यूम कर रहे हैं, और उनके सामने उनका भी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, जो वो खेलना चाहिए, वो बंद हो चुका है। बच्चों की भी लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुकी है। आई हैव सीन kids in the grade 4th and 5th having a belly. It is very shocking to me as a professional ki how can a child in the grade 4th and 5th who should be full of energy, jumping around, playing, is sitting on a like a couch potato, वो बैठे हैं, वो tablet या phone में है, and he is having a belly, which is not at all a healthy practice. So I think we all need to understand and see that what is we are consuming, how we are consuming. जैसे मैंने बोला, जैसा अन्न वैसा मन, right? And also the food that is months old, as I explained to you, are sedentary lifestyle. So when you eat unhealthy food, your gut is not clean, leading to constipation and various forms of physical and mental health issues also. And जिसकी काफी सारी studies और researches are हमारे पास available है। Another aspect is of mindful eating. अगर आप आज ने देखा होगा तो पेरेंट्स का जो कंप्लेन रहते हैं कि बच्चे खाना नहीं खाते, तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन उनके पास ये होता है कि बच्चों को मोबाइल पकड़ा दो, मोबाइल देखते देखते या यूट्यूब का वीडियो देखते देखते बच्चे खाना खा लेते हैं, तो उनसे पेरेंट्स का भी काम इजी हो जाता है और बच्चे खा ही लेते हैं। बट सी द लेवल ऑफ
the damage we are doing to the children when they are eating food. ना ही उन्हें इस बात का ध्यान है कि वो क्या खा रहे हैं, टेक्सचर क्या है, स्मेल क्या है, टेस्ट क्या है. They are not even mindful of what they are eating. Now, how we can relate this to the to the video that we saw is, जिस तरीके से, जिस माइंडसेट के साथ आप खाना या पानी लेते हैं, वो उसी तरीके से आपकी बॉडी में रिएक्ट करता है. सो माइंडफुल ईटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, वी आर वॉचिंग अ मूवी, हम लोग व्हाट्सएप देख रहे हैं, हम कुछ वायलेंट कंटेंट देख रहे हैं, उसी टाइम पे हम खाना खा रहे हैं. आई थिंक जितने भी लोग ये सेशन देख रहे हैं फ्रॉम टुडे, आई थिंक एटलीस्ट द स्मॉलेस्ट थिंग दैट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे इज कि व्हेनेवर इट्स योर मील टाइम, everybody is, you know, either not talking and the TVs and the mobiles are shut, or even if you're speaking, you're talking about the positive experience that you've had today and not any negative thing, because it very very much impacts the way you are consuming the food or the water. And to show you this, I have one example here, the case study. You know, there was a study done on 1100 people in US and UK. तो उन लोगों को सेम ही खाना दिया गया, कॉमन सेम खाना. But now when they went for the research and the study, you know, the scientists found that जो उनके ग्लूकोज लेवल थे आफ्टर द मील, एक्चुअली बहुत सारे पैरामीटर्स थे, बट because I cannot show you all the parameters here. So जो उनके glucose levels थे वो सब में different थे. Now even this thing can happen with water also. From the same vessel, if I'll consume water and if you consume water, it will not behave the same way in my body and your body. That is how intricate, sophisticated our human mechanism is. So I want you all, you know, to not fall into that one size fits all diet, जैसे keto diet, कुछ भी है, सब लोगों के लिए हर एक चीज फिट नहीं बैठती है. So that is why, you know, Ayurveda and yoga deals individually with every human being. डायग्नोसिस के लेवल पे भी, सोल्यूशन के लेवल पे भी. एंड आई होप कि अभी ये सेशन से आई कुड गिव यू एन इंसाइट ऑफ हाउ फूड एंड मेंटल हेल्थ आर रिलेटेड एंड हाउ वी नीड टू बी मोर माइंडफुल, more conscious of what we are eating as well as how we are eating, and be more aware, spread an awareness towards the gut health. So I hope you all did have a good insight, and so thank you all. And so I just wind up the session here. Shivan, you can take forward from here. So these are my contact details if anybody wants to reach out to me for anything. And this is Anand Nai's address as well. Thank you, ma'am. I think we are now open for question answers. So if anyone is having any questions, आप लोग please chat box में If type anybody कर has सकते any हैं. questions, they can, you know, in the chat box, they can ask me any questions regarding the session or any other questions that they have. Meanwhile, the questions are coming. I would like to say that even from my end, I enjoyed the session a lot. I mean, we had a lot of scientific facts to see through कि कैसे food हमारी daily life को affect करता है. Plus, I am also I'm a very foodie person. मुझे junk food बहुत पसंद है, but I do realize now that how it might be affecting me in some ways. And I have a question. If you need to improve the habit of a kid who is habitual to have food with mobile phone, what we can do? See, it's a conditioning that has already happened. I always give this example to my patients also कि अगर आपको कोई हैबिट चेंज करनी है तो it is not going to happen on the spot, या एक दिन में वो चेंज नहीं होने वाली है. You know, you can slowly and slowly try you know, giving him a substitute for something, or give him a habit of eating the food by himself. एक दो दिन या हफ्ता 15 दिन you will face a lot of difficulty. Naturally he might refuse to eat food, but that's okay. You know, if the child is hungry, he will eat no matter what. वो एक टाइम खाना नहीं खाएंगे, दो टाइम खाना नहीं खाएंगे, but ultimately he will have to eat the food. But then you will also have to be patient with the child and not be very forceful of कि तुरंत ही फोन दे दिया. Maybe धीरे 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 करके you can decrease the time. कि जैसे दाल रोटी खाता है, you can you know, talk to the child and make it a condition कि you eat the dal chawal without the phone, and then while you are eating your chapati you can have the phone. So धीरे धीरे करके you can bring it down. If you totally take it away, then he might even
aggression हो जाता है या बच्चे गुस्सा या जिद में अड़ जाते हैं. So the best way to get the children do something is to get them constructively involved into something, into the decision making process. I guess this is how you can go ahead with this. If children feel that their memory is not for long period of time, which food we should offer them? Uh, See, memory issue also, if I go into the more technical aspect, then if the child is normal, उनको और कोई issues या नहीं है, तो we don't need testing. But अगर बच्चे का कुछ intellectual impairment है, तो that we have to diagnose it to the testing के करके. और अगर normal बच्चा है, तो see, memory you can involve by what kind he is more preferable with. And food में generally one what we suggest is Brahmi है. Brahmi, which is very much helpful बच्चों के लिए. Shankh Pushpi है, which we advise to be given to the children, which helps develops their brain as well. These two things which Ayurveda recommends for the better memory also. And कुछ चीजें हैं जो बच्चों को याद नहीं रहती हैं, तो make sure कि आप उनको रात को सोने से पहले याद करवाएं. रात को सोने से पहले जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होता है. So then the children will be better able to digest it. Also, one thing what you can do is identify how the child is, be able to वो याद कैसे रखते हैं. He's an auditory learner, he's a visual learner, or is a kinesthetic learner. Accordingly, also you can help the child to deal with these issues. If anybody have any questions, you can ask. And from my side, it was a fantastic session, ma'am. I think you touch the current issues that parents or teachers or child are facing. So thank you very much for that. And I think it is a wonderful advice, like in a current scenario, the food habits are mostly we are a person who was especially who are working or जब बच्चे बाहर होते हैं, so everybody is preferring that fast food and everything. But I think this session will help them to understand that how such kind of things impact in their overall psychology and their behavioral and overall personality of that particular people. So yeah, if guys, if you have any questions, you can also write down right now, or you can join our WhatsApp group, so where you can get all the updates of the upcoming sessions. If you like the session, or if you have any recommendation, any feedback, you can share just right now. Or if you have any question, you can ask in a chat box. Even if you have any suggestions for the next upcoming sessions, you can also share with us right now or later on in the WhatsApp group. And yeah, next upcoming sessions are the series based on the exams. So my humble request to all the teachers and parents and all the students to share those links and inform each and everyone, because it is a free of course, and it is a series with the psychologists, so they can help your child. Or if you have any specific questions, you can also ask us in advance so that we are able to address all the questions. So we will share the link very soon to you on your registered email ID. And if you are joining that WhatsApp group, we will share all the upcoming events and the links for the questions and upcoming sessions on the same WhatsApp group. So you can join that group as well. Ma'am, I think we covered all the questions, and right now there is no other questions. Any concluding remark from your side? Thank you for a wonderful session, and to all the audience who have attended this session. I hope I could give you some insight and some meaningful, valuable awareness about how food and mental health are related. Hope to connect to you all soon with another interesting session if possible. So namaste and thank you all for having me. Thank you. Thank you very much, ma'am. This video will available on the same link. So if someone is missing this video, they can log in with your registration and you can see the video, and later on we will upload the same video, and all the other videos of previous sessions of Mentopine is already on a YouTube channel. So you just need to search LEAAD and you will get all the links. And I think Shivani had shared that link as well. So you can visit our YouTube channel and you can see the video, you can share the video to your relevant people. And if you have any suggestions, feedback, please write back to us. And thank you very much. And thank you Shweta ma'am for sparing your time, and your overall session was very good, and it's
very enriching and helpful to all the parents, teacher, and students as well. Thank you very much.